Hello students, I hope you all are fine. So students, as you know that we have discussed about the one part of this unit, equilibrium, that was the chemical equilibrium. So student, this unit we will discuss in two parts. Second half is the ionic equilibrium. Okay, students, ionic equilibrium. First of all, you should know about electrolyte. Electrolytes. What do you mean by the electrolytes? Electrolytes is any compound, any substance or compound we can say, which can dissociate into ions, either when it is in molten state, means या तो ये हमारी melting states में होना चाहिए, and students या फिर ये किस में होगा, in solution form. We can take aqueous solution of that. इलेक्ट्रोलाइट्स वो होते हैं जब हम किसी भी सब्सटेंस का, किसी भी कंपाउंड की या तो मोल्टन स्टेट को लेंगे या उसको सॉल्यूशन फॉर्म में लेंगे, तो वो क्या करता है, क्या करेगा, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट. सो इट कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. I hope this definition is clear to you. Like students, if you are having sodium chloride, table salt you are having, but you are having salt in solid form. Okay, जो आप घर पे यूज करते हैं नमक, अगर सॉलिड फॉर्म में आपके पास है, बिल्कुल ड्राई फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है, और तब आप उसमें से करंट पास करते हैं, सो इट डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. क्लियर. बट स्टूडेंट, अगर मान लो आपने पानी लिया, आपके पास वाटर है और उसमें आप सॉल्ट्स को मिलाते हैं, मीन्स आप सॉल्ट का एक्वस सोल्यूशन लेते हैं, पानी में अगर सोल्यूशन बनाते हैं, तो उसके बाद अगर आप उस सोल्यूशन से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो इलेक्ट्रिसिटी पास वहां से होगी. या फिर आपका जो सॉल्ट है वो मेल्टिंग फॉर्म में है ऑलरेडी आपके पास, तो उसमें से भी क्या होगी, इलेक्ट्रिसिटी पास होगी. Okay, so students, electrolytes are those substances which can conduct electricity when either they are in molten state or they are present in their aqueous solution. So that compound or that substance is known as the electrolyte. It is clear or not? Okay, why they are passing electricity through them? Because students, when we make aqueous solution means solution in water, then student they dissociate into ions. They dissociate into ions completely. Clear or not? Due to dissociation, then flow of these ions take place in solution. Due to flow of ions, they can conduct electricity through them. Clear or not? So it will happen. Any doubt in this one? Student, one term is dissociation. We use a number of times dissociation. And one term ionization we use. What is the difference between them? Dissociation and ionization. Dissociation means
when a compound already contains some ions. Okay, and when we make solution of that, then they dissociate. Like students, if we have sodium chloride, you know very well, here's Na plus and Cl negative are present. This one is the ionic compound. Okay, when it is in dry form, then it is in sodium chloride form. But when we add this one in water, when we make aqueous solution of this one, then these ions dissociate. So this is known as the dissociation. But one term is the ionization. Ionization मीन्स पहले से आपका जो कंपाउंड है वो आयोनिक कंपाउंड नहीं है, पहले से आयंस में प्रेजेंट नहीं है, कंपाउंड में पहले से आयंस प्रेजेंट नहीं है. लाइक HCl, you know very well HCl, how does it form? It is formed by covalent bond. Hydrogen has one valence electron, chlorine has 7 valence electron, so 1 electron shared by this one and 1 by this one, so they are forming covalent bonds. So the HCl is the covalent compounds, so ions are not present in it, but if I make solution of this one, aqueous solution, okay, means if I dissolve in water, then student, in presence of water, or we can say in aqueous solution, it dissociate into ions, it get ionized. अगर आपका कंपाउंड पहले से ही आयोनिक कंपाउंड है, यहाँ पर आपको पता है कि भी सोडियम के पास 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली लूज किया था, जिससे अब इसके पास क्या है 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं और ऑक्टेट कंप्लीट है. क्लोरीन के पास पहले से 17 इलेक्ट्रॉन थे, इसने इस इलेक्ट्रॉन को कंप्लीटली गेन किया था एंड आफ्टर दैट फॉर्मेशन हुई थी Cl नेगेटिव की. देन Cl नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, पॉजिटिव एंड नेगेटिव, इनके बीच इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थी. पॉजिटिव एंड नेगेटिव जो आयंस हैं, अपोजिट आयंस एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे. ओके, तो उस अट्रैक्शन से फिर इन्होंने इनके बीच का जो बॉन्ड बना था वो क्या था, आयोनिक बॉन्ड. तो NaCl में ऑलरेडी आयंस प्रेजेंट है, एक्वस सॉल्यूशन में केवल इन आयंस का डिसोसिएशन हुआ है. बट HCl का मैं एग्जांपल लूं तो ये पहले से कोवेलेंट कंपाउंड था, यहाँ आयंस प्रेजेंट नहीं थे. जैसे ही मैंने इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाया तो ये आयंस में ब्रेक हुआ था, आयंस की फॉर्मेशन हुई थी. सो इट इज नोन एज आयोनाइजेशन एंड दिस वन इज नोन एज द डिसोसिएशन. दिस कंसेप्ट इज क्लियर टू यू? ओके, देन स्टूडेंट्स, नॉन इलेक्ट्रोलाइट्स. इलेक्ट्रोलाइट्स वो कंपाउंड्स, वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनके का अगर हम एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं या फिर उनको मोल्टन स्टेट्स में अगर हम लेते हैं, सो दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. बट व्हाई दे कैन कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? बिकॉज दे आर फॉर्मिंग ions, because formation of ions taking place here, they are dissociating into the ions. Okay, and flow of ions take place there. Due to flow of ion, they can conduct electricity through them. But students, non-electrolytes, they do not conduct electricity. They do not conduct. ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते. Why? They do not conduct electricity. Either they are in aqueous solution, either we are having aqueous solution or we are having molten, in molten state. Why? Because student, they are not dissociating. They do not dissociate into ions. Into ions. Like if I have urea, if I have glucose,
if I dissolve them in water, then they do not dissociate into ions. Okay, why? Because water is polar, but it is non-polar. Okay, they have opposite nature. That's why they are not dissociating. ओके, सो ये डिसोसिएट नहीं होते, आयंस की फॉर्मेशन नहीं होती, आयंस की फॉर्मेशन नहीं होंगी तो फ्लो नहीं होगा, एंड अगर फ्लो नहीं होगा सो दे कैन नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी थ्रू देम. क्लियर और नॉट? ओके, सो स्टूडेंट्स उसके बाद एसिड्स एंड बेस, ये भी क्या है? हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, क्योंकि एसिड्स एंड बेस भी क्या करते हैं, जब भी हम इनका एक्वस सॉल्यूशन लेते हैं तो एसिड्स एंड बेस भी क्या करेंगे? आयंस में डिसोसिएट होंगे. एसिड्स H पॉजिटिव आयंस देते हैं, बेस OH नेगेटिव आयंस देते हैं. तो ये भी एग्जांपल्स हैं किसका? इलेक्ट्रोलाइट्स का. ओके, तो अब हम बात करेंगे, कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स ऐसे होते हैं जो कंप्लीटली डिसोसिएट हो जाते हैं आयंस में, उनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स. एक होता है बेटा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होते हैं? जो कंप्लीटली डिसोसिएट होंगे, विच कैन डिसोसिएट कंप्लीटली, लाइक सोडियम क्लोराइड and water. You know very well, both are polar. This is also polar in nature, and this one is also polar in nature. So both have same nature. That's why they can dissociate completely into the ions. Clear or not? So here complete dissociation will take place. Like if we are having 100 molecule of this one, then it will give 100 ions of Na plus and 100 of Cl negative. Means completely it will dissociate. Maximum dissociation take place. Then electrolyte is known as the strong electrolyte. But some electrolyte like acetic acid, it is organic compound, so it is not, it is polar but less polar, it is polar but less polar. Okay, then students, it can also dissociate into ions but not completely, not completely. This it can also dissociate into ions but not completely. और जो completely dissociation नहीं दिखाते तो वहां क्या होगा? इक्विलिब्रियम, आयोनिक इक्विलिब्रियम होगा. क्लियर? आयोनिक, यहाँ पर इनके बीच और इन आयंस के बीच इक्विलिब्रियम अटेन होगा. ऐसा क्यों? क्योंकि रिएक्शन हमारी बोथ डायरेक्शन में, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जहां रिएक्शन हुई कि इनके डिसोसिएशन से आपको आयंस मिला, वहीं दूसरी तरफ एसोसिएशन से अपोजिट डायरेक्शन में भी हमारी क्या हो रही है? रिएक्शन. तो जैसे जैसे ये उसमें कन्वर्ट हो रहे हैं तो प्रोडक्ट भी धीरे धीरे किस में कन्वर्ट हो रहे हैं? आपके रिएक्टेंट्स में. तो यही रीजन है कि कंप्लीटली जो हमारा रिएक्टेंट है वो प्रोडक्ट में टूट ही नहीं पाता, डिसोसिएट हो ही नहीं पाता, क्योंकि साथ साथ में वो भी दोबारा इसी में एसोसिएट हो रहे हैं. क्लियर? वो दोबारा से रिएक्टेंट की फॉर्मेशन कर रहे हैं. तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम अटेन होता है जब इन रिएक्टेंट्स की और इन प्रोडक्ट्स की कंसंट्रेशन क्या हो जाती है? कांस्टेंट. सो आयोनिक इक्विलिब्रियम की कहाँ अटेन होगा? आयोनिक इक्विलिब्रियम अटेन होगा जब हमारा इलेक्ट्रोलाइट कैसा होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा. इट इज क्लियर और नॉट? सो यहाँ पर जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं ये कंप्लीटली डिसोसिएट नहीं होते. ऐसा क्यों? क्योंकि रिएक्शन जो आपकी है ये रिवर्सिबल रिएक्शन शो करती हैं. दोनों भी फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन होती है, साथ में रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में होती है. प्रोडक्ट्स जो आयंस हैं वो दोबारा किस में भी कन्वर्ट हो गए? हमारे एसिड, मीन्स दोबारा से हमारे रिएक्टेंट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं. ओके, सो दैट्स व्हाई complete reactants cannot be form product. Okay, and it is so they exist in ionic equilibrium. Clear or not?
Then students, one more term is there, degree of dissociation, or we can say degree of ionization. जो आपके वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, अभी हमने देखा कि कंप्लीट तो वो आयोनाइज नहीं होते, कंप्लीट डिसोसिएट नहीं होते। अब कितना डिसोसिएशन हुआ है वो हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, कैसे हम निकाल सकते हैं? उसके लिए मान लो आपके पास यही CH3COOH एसिटिक एसिड आपके पास है, वाटर आपके पास है, ये डिसोसिएट हुआ एसिटेट आयन में एंड H पॉजिटिव आयंस में। फर्स्ट ऑफ ऑल आपका डिग्री ऑफ आयोनाइजेशन या डिसोसिएशन होता क्या है? डिग्री ऑफ डिसोसिएशन के कितने आपने मॉलिक्यूल्स लिए थे? मान लो कि हमने 100 मॉलिक्यूल्स लिए थे, बट डिसोसिएशन हुआ केवल 50%। सो फ्रैक्शन ऑफ मोलिक्यूल that dissociate like we here 50% dissociated, so now we are having 50 only. Okay, so number of particles dissociated divided by total number of molecules, that is known as the degree of dissociation here. क्लियर? आपके टोटल कितने मॉलिक्यूल्स थे और कितने उसमें से डिसोसिएट हुए? ओके, so number of molecule dissociated divided by total molecules. In this way we can calculate degree of the dissociation. but यहां से फॉर्मूला हम डिराइव करेंगे. Let us consider initially you are having reactant C means concentration, maximum concentration. अब जब स्टार्टिंग में आपने रिएक्शन, अभी टाइम 0 है, रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई, रिएक्शन टाइम इज 0, टाइम 0 मीन्स अभी तक रिएक्शन स्टार्ट नहीं हुई है, तो आपके पास केवल क्या है? रिएक्टेंट्स है, क्योंकि रिएक्शन जब स्टार्ट ही नहीं हुई तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में तो कन्वर्ट हुआ नहीं. सो इनिशियली यू आर हैविंग रिएक्टेंट ओनली. ओके, product will be 0. Let us consider after time t1, alpha particles, C alpha particle dissociate. Now you were having total C alpha dissociate. So in reactant side there are C minus C alpha. Okay, and students here C alpha of this one and C alpha of this one are forming. Try to understand. If you are having NaCl, you are having 1 mole, then after dissociation it will give 1 mole of Na plus and 1 mole of Cl negative. Clear? So in same way, if C alpha of this one dissociate, then it will give, if one you are having, then it is also giving CH3CO negative 1 and 1 of this one. And if you will break 2, then it will give 2 acetate plus 2H positive. And if you will dissociate C alpha, then it will give C alpha of this one and C alpha of this one. Now it is clear why I written 2 times. Because after dissociation 1 NaCl we are having only, so it is giving 2 ions because dissociation taking place here. 1 of this one, 1 of this one. If I will dissociate 2, then it will give 2 of this one and 2 of this one. And if C alpha, then it will give C alpha of this one and C alpha of this one. Clear or not? So initially you were having reactants only. Let us consider that is the concentration C.
Initially product was 0 because time is 0, reaction didn't start till now. So students, here 0, but after time t, let us consider C alpha particle dissociate. So now here concentration, initially C was there, पहले C कंसंट्रेशन थी, C अल्फा डिसोसिएट हो गई, तो अब यहाँ पर कितनी बची, C माइनस C अल्फा। क्लियर? तो C अल्फा पार्टिकल डिसोसिएट हुए हैं, तो इसने C अल्फा इसके फॉर्म की और C अल्फा H पॉजिटिव की फॉर्मेशन हुई। दिस इज क्लियर और नॉट? एनी डाउट? नो। नाउ स्टूडेंट, दिस वन इज द एसिड, सो आई कैन राइट dissociation constant. K is the dissociation equilibrium constant. So here we are doing dissociation, so we can say dissociation constant, and it is acidic, so we can write Ka also. Clear? Then is equal to equilibrium constant आप कैसे निकालते थे? Product of concentration of product of concentration of products. So here product concentration C alpha and C alpha divided by product of concentration of reactants. Clear? Is equal to C alpha by C, I can take common 1 minus alpha. C and C cancel, so it will be equal to C alpha square by 1 minus alpha. Alpha is the degree of dissociation. Alpha is the degree of dissociation, and K is the dissociation constant. Clear? And if you want to calculate alpha, so from here K is equal to C alpha square C 1 minus alpha. But students, if you are having weak electrolyte, wait a minute, C is not here, na? We have cut it this one. 1 minus alpha. If you are having weak electrolyte means it is dissociating in very less amount. So I can neglect this alpha or not? Okay, so I can neglect this one. So K is equal to C alpha square, and alpha is equal to K by C, and alpha square is equal to K by C, and alpha. By using this formula, you can calculate the degree of the dissociation. Means weak electrolytes completely dissociate नहीं होते, वहां कुछ ही % dissociation हुआ है। अब dissociation कितना हुआ है, किस रेट से dissociation हुआ है? By using this formula, you can calculate degree of the dissociation. It is clear or not? Any doubt in this? Yes. And this one is the dissociation constant formula. This clear? Yes. Then students, if I talk about acid base, these are also electrolytes. Okay, these are also strong electrolytes, as well as some acid and some base are the weak electrolyte. Clear? So different scientists gave us different concept. First one, Arrhenius concept of acid and base. स्टूडेंट सिंपल, आपने एसिड एंड बेस के बारे में आपको पता है, यू नो वेरी वेल. एसिड्स आर श्योर इन टेस्ट, they have pH less than 7, they can conduct electricity through them, okay, they turn blue litmus into red. These are the common things about the acid. Okay, so what was the Arrhenius concept? Arrhenius told us that acids are those substances
which produce H positive ions, which produce H positive ions in aqueous solution. आर्हेनियस ने हमें ये बताया कि जो सब्सटेंस हमें एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस देते हैं, H पॉजिटिव आयंस प्रोड्यूस करते हैं, वो क्या है? एसिड्स। वो क्या है? एसिड्स। जैसे कि HCl। HCl पानी में अगर हम सॉल्यूशन बनाएंगे देन इट गिव्स अस H positive you can write, or you can write H3O plus also, hydronium ion also. Okay, plus Cl negative, plus Cl negative. Okay, simply you can write this one also, because this H plus it will generate, and water, two lone pairs are here. Clear? So it can give electron to this one, and from here H3 1 2 3 O, and if it will give electron then positive. Okay, so either you can write H positive or you can write H3O positive also. Clear? So students, it is producing H positive ions in aqueous solution. That's why it is acid. That's why it is acid. Clear? Hydrochloric acid, nitric acid, sulfuric acid, they dissociate completely. They dissociate completely. That's why they are known as the strong acid. Mineral acids, they are also known as mineral acid and also known as the strong acid. Okay? And acid like acetic acid, I give an example now only. These are the organic acids. Organic acids like citric acid, like malic acid, okay, means which you use for eating purpose, okay, which you can get from your fruits, vegetables. These are the organic acids. So organic acids, you know very well, they cannot dissociate completely into ions. They cannot dissociate completely into ions. So you will show them with the equilibrium sign. With equilibrium sign. So they are showing ionic equilibrium, and they are known as the weak acid. Acid. सो आर्हेनियस ने हमें बताया कि जो H पॉजिटिव आयंस देते हैं, जो सब्सटेंस एक्वस सॉल्यूशन में H पॉजिटिव आयंस देते हैं, दोज आर नोन एज द एसिड्स. एंड सब्सटेंसेस which produce OH negative ions in aqueous solution are known as the base, like NaOH, sodium hydroxide. Okay, if you make solution in water, then it also gives us Na plus OH negative ions. If you have ammonium hydroxide, then it cannot dissociate completely. So it is weak base. It is weak base. जो completely dissociate होते हैं, those are known as the strong base. Those are known as the strong base. And which cannot dissociate completely are known as the weak base. But students, you know, आर्हेनियस ने बताया कि जो एक्वस सॉल्यूशंस में आपको H पॉजिटिव आयंस देंगे, दोज आर एसिड्स, एंड जो OH नेगेटिव आयंस देंगे, दोज आर द बेसिस. बट स्टूडेंट, आर्हेनियस कंसेप्ट हैज सम लिमिटेशंस. What are the limitations? You know, there are some substances which do not have H positive ions for donation, but they are acidic in nature. And some are those which are not having OH negative ions, but they are base, like ammonia, NH3,
इट इज बेस। कहने को तो इसके पास हाइड्रोजन तो है बट NH, इसके पास OH तो है ही नहीं, बट इट इज बेसिक। सोडियम कार्बोनेट, इट इज ऑल्सो बेसिक। ऑल मेटल ऑक्साइड्स except aluminum oxide and zinc oxide, these are also base. So these are basic in nature, but they are not having OH negative ions. They are not having OH negative ions for donation. Carbon dioxide, BF3, boron trifluoride, aluminium chloride, sulfur dioxide, etc. These are acidic. लिमिटेशंस क्या थी कि कुछ सब्सटेंसेस जैसे हैं जिनके पास देने को H पॉजिटिव नहीं है बट वो फिर भी एसिडिक हैं, उनके बारे में अर्हीनियस ने हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं दी। ओके, कुछ ऐसे हैं जिनके पास OH नेगेटिव आयंस देने को नहीं है बट फिर भी वो क्या है, बेसिक हैं, उनके बारे में भी हमें कोई एक्सप्लेनेशन नहीं मिली। क्लियर और नॉट? सो आफ्टर दैट स्टूडेंट्स, one more concept was given by the Bronsted, Lowry Bronsted. Lowry Bronsted concept. Lowry Bronsted given us concept of conjugate acid base pair. लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने हमें कहा कि ये बात सही है, एसिड्स आर द प्रोटॉन डोनर, एसिड्स आर द प्रोटॉन डोनर, बट बेस आर द प्रोटॉन एक्सेप्टर, बेस आर द प्रोटॉन एक्सेप्टर, कि जो हमारा प्रोटॉन को डोनेट करता है एक्वस सॉल्यूशन में, H पॉजिटिव आयंस देता है, दैट इज द एसिड, बट जो H पॉजिटिव आयंस को गेन करने की जिसकी टेंडेंसी है दैट इज नोन एज द बेस। और उसने कहा कि एसिड और बेस में केवल एक प्रोटॉन का ही डिफरेंस है, एसिड और बेस में केवल एक प्रोटॉन का ही डिफरेंस है। कैसे? इफ यू आर हैविंग H2SO4, if you will make aqueous solution, then it will give just H positive ions plus sulfate ions. So students, this is acid, strong acid it is, because it is mineral, it is strong acid. With respect to this one, this water is basic, this water is basic. Water is amphoteric, it can be have like acid as well as base. वो डिपेंड करेगा कि ये रिएक्शन किससे कर रहा है। अब यहाँ ये इसके कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग एसिड है तो ये एसिड, और ये क्या हो गया, वीक बेस। क्लियर? अब यहाँ ये एसिड है तो जो ये सल्फेट आयन है, अगर इसको कहीं से H पॉजिटिव आयंस मिलेंगे तो बहुत जल्दी लेगा तो क्या रहेगा, ये बेस। ठीक है, तो ये इसका कंजुगेट बेस है, दिस इज द कंजुगेट बेस फॉर दिस वन। क्लियर और नॉट? ऐसे ही ये वीक बेस है तो ये कंजुगेट क्या है, एसिड, कंजुगेट एसिड। उसने कहा कि केवल किसका डिफरेंस है, एक, क्योंकि अभी ये H3 और पॉजिटिव आपका है तो ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव है तो ये दोबारा से क्या कर सकता है, बहुत जल्दी H पॉजिटिव लेगा। क्लियर है? तो यहां से बहुत जल्दी ये क्या कर सकता है, इसके पास क्या था, पॉजिटिव चार्ज है, तो जिससे ये दोबारा से रिलीज कर सकता है।
क्लियर। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पर लॉरी ब्रॉन्स्टेड ने क्या बताया कि एसिड और बेस के बीच का जो डिफरेंस है वो केवल एक प्रोटॉन है। एसिड्स प्रोटॉन डोनर्स होते हैं और बेस क्या होते हैं, प्रोटॉन एक्सेप्टर होते हैं। ओके, और ये पेयर बनाते हैं कंजुगेट एसिड एंड बेस। अब अगर मान लो, एक बात और उसने हमें बताई कि जो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कंजुगेट बेस जो है वो क्या होगा, वीक, और अगर वीक एसिड है तो कंजुगेट बेस कैसा होगा, स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहां पर ये क्या है, वीक बेस है, तो इसका कंजुगेट एसिड क्या होगा, स्ट्रॉन्ग। दिस इज क्लियर और नॉट। सो स्टूडेंट्स, इसने कुछ लिमिटेशंस को ओवरकम किया, कुछ लिमिटेशंस को तो ओवरकम किया, लाइक दिस वन, इफ यू आर हैविंग अमोनिया, you are having ammonia, so here ammonia have one lone pair of electrons, you know very well. Okay, if it have H positive, it can accept or not, it can accept, it can accept, because it has tendency to accept H positive ions, it has tendency to accept proton, so we can say this one is the base. Clear? Means some limitation he overcome, but he was also not able to explain some limitation, like he was not able to explain about carbon dioxide, why it is acidic. Okay, after that some concept was also there, that was the Lewis acid and base. So we will discuss about that concept tomorrow. Any doubt in these concepts? So thank you, have a nice day.